हुई कल वो ये कि आरबीआई ने ब्याज दरों में करीब 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद कई मैनेजमेंट से हमने कई बात की, कॉर्पोरेट से बात की और ये समझा कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके और हमारे जीवन पर। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। What the banks will do is that the repricing cycle is 3 monthly. So you will receive that email somewhere between now in next 3 months. So it is, some of you will get it tomorrow morning, some of you will get it in within 90 days. But the fact that that it is going to get repriced now is pretty much certain. You can and I think what is also important is I think what has been well articulated is that this is not the last repo rate hike. And so therefore, please, remember that repo was around 5.15% pre-COVID. So at the very least, we need to get there. And if you look at it in the context of real rates, if inflation broadly averages somewhere in the vicinity between 5/4 and 5/2, we've got to get to, somewhere in that vicinity between 5/4 and 5/2. So that means that anything between 75 to 100 basis points more of repo rate hikes is possible in the next 1 year. Food price increase because of the geopolitical issues, especially wheat and edible oil price going up significantly in the last 1 month. That necessitated some kind of rate increase. And that is something everybody expected, whether it was 25 basis point or 40 basis point. I think that is the only thing, it was not totally unexpected. But as far as I feel the rate increase will not straight away create a challenge for raising resources, because liquidity in the system is quite good. And bank is not the only source of raising resources. The other market also is equally liquid right now. So I think liquidity is good. So raising resources is not a challenge. RBI did make it clear that even in the last meeting that they will be driven by data which is coming, and the situation is extremely volatile because of the war in Ukraine, and therefore the resultant hikes in the oil price and also the commodity prices and edible oil, all of which are important variants, important ingredients into the India's inflation number. And inflation has been above the benchmark for last month and likely to be so this month. So maybe some early data which RBI has got has led them to take this decision even within the two meetings. But as the governor explained, they have done this last time also to respond to the COVID pandemic, and they reduced by 115. So therefore, 40 basis points to react to whatever developments there are which are happening is okay. And the other thing we have to remember is the Fed rate hike was imminent, and it has actually happened last night. So therefore, to maybe make sure that not too much outflow happens from other markets, even the equity market FII outflow has been happening for some time. But other markets, debt markets, bond markets, all of those, maybe some outflow could be held because of the Fed action. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा कि ये कोई दिक्कत होगी इन द लॉन्ग रन, बट शॉर्ट रन डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है कि जो ईएमआई भरना है वो बढ़ जाएगा. तो मेरे अंदाज से जरूर ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हाउसिंग के ऊपर जरूर आ सकती है. लेकिन लॉन्ग रन में ये कोई हमारे जो तजुर्बा है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके ऊपर आएगी. लेकिन प्रॉब्लम दूसरी बात है कि हमने जो रिजर्व बैंक गवर्नर की जो राय ली कि ये इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा दें, मेरा अंदाज है कि वो एक मॉनेटरी साइड है, लेकिन उसमें सप्लाई साइड जो इन्फ्लेशन है उसको कोई कंट्रोल होने वाला नहीं है. तो मेरे अंदाज से ये सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना है कि हम ये उसको कैसे संभाले. वेदर यू वांट टू डू अ जीएसटी कट, वेदर यू वांट टू डू कस्टम ड्यूटी कट, या ऑयल प्राइसेस पर कुछ काबू लाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इसके बावजूद तो जरूर बढ़ते जाएगा. मुझे नहीं लगता कि ये 40% का जो रेपो रेट में हाइक हुआ है इसका बैंक्स इमीडिएटली रेट हाइक कर देंगे एनबीएफसी को लेंडिंग पे, ये ऐसा होगा नहीं. अगर होगा भी तो बहुत मार्जिनल 10 बेसिस पॉइंट्स या 12-15 बेसिस पॉइंट्स होगा, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. और बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी जो माइक्रो फाइनेंस में लेंडिंग करते हैं
उनके पास जनरली लेंडिंग अगर 20% पे है और कॉस्ट ऑफ फंड 6% है, और कॉस्ट ऑफ फंड अगर 6.2 हो गई या 6.3 हो गई तो भी उनके लिए भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ग्राउंड लेवल पे मुझे नहीं लगता इसका डिमांड से कोई असर होगा। इस तरह के रेट कट्स होते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन जो अल्टीमेट लेंडिंग रेट बोरोवर है वो मेरे ख्याल से स्टेबल ही रहेगा।